Okay, screen clear है आप लोगों को? Yes, sir. Okay, so these are the topics we last discussed. Okay, phylum Protozoa we have discussed, phylum Porifera we have discussed, phylum Coelenterata we have discussed, and phylum Platyhelminthes we have discussed. Okay, these were the 4 phylum which we discussed in the last class. Now, today we are going to discuss the next, that is phylum Nematoda. Okay, phylum Nematoda are also known as phylum Escalamenthes. Okay, phylum Nematoda or phylum Escalamenthes are commonly known as round worms because the shape of them are round. Okay, they are round in shape and both the ends, the interior and the posterior ends, are pointed. Okay, so the first main point is they are commonly known as round worms. They have long cylindrical bodies with both ends pointed. These animals have both the end pointed. Okay, and some of their species are free living, but majority of them are parasite. Parasite again mean they live inside the host body, get their food from the host, and in return they are going to do what? They are going to harm the host. Okay, and some of them are normally living freely in the soil, surface of the soil, so they are free living as well. Then we are having the bodies. The bodies are unsegmented. What are segmentation? Segmentations are basically the cuts present in the body. Like for example, your finger. Look at your finger. You will find out different 3 segments in that. 1, 2, and 3 segments. Okay. So each of your finger has 3 segments. They have 3 segments. If anything is having these segments, we call them segmented body. If they do not have the segments, then we call them unsegmented body. So it means that they have smooth body without having any kind of segment. They do not have any kind of segmentation. They do not have any kind of cuts in their body. So they have a smooth body. Okay, they have a complete one-way digestive system in which the mouth is present at one end and at the other end the anus is present. Okay, so but from one end they eat and from the other end they normally remove. Okay, so the free living are normally living, and as I told you that the organisms which are free living, they will be living at the upper layer of the soil, or they normally can be live in the seawater or in fresh water, but majority they can be seen in the upper layer of the soil. The parasites live in the intestine of humans and other animals. The most common parasite is Ascaris. Ascaris lumbricoid lives in the intestine of human beings. ओके जो बच्चों के अंदर नॉर्मली होता है ना कि वो ग्रोथ उनकी रुक जाती है, वो ग्रो नहीं कर पाते, द स्किन बिकम पेलर इन कलर, सो दैट इज बिकॉज कि इनकी बॉडी के अंदर एस्केरीज प्रेजेंट होती है. तो ये इन एस्केरीज को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट काइंड के मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, एंड जब ये एस्केरीज हमारी बॉडी से निकल जाए तो हमारी ग्रोथ जो होती है वो अच्छी हो जाती है, फिजिकल एंड मेंटल बोथ. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट स्टेमिना हमारा बेटर हो जाता है, और जो हमारी मेंटलिटी है वो स्ट्रेंथ पकड़ लेती है, क्योंकि ये मेंटलिटी को भी इफेक्ट करता है. तो एस्केरीज जो है सबसे कॉमन है जो कि इंसान की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. हुकवर्म है, ये एक दूसरा है क्योंकि ये भी पैरासाइट है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी में, और इनके हुक्स होते हैं, उन हुक्स के जरिए ये क्या करता है अपने आप को उस ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच करता है, एंड देन इट सक्स द ब्लड आउट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. सो दीज आर द पैरासाइट्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप. ओके, again phylum nematoda के जो characters है, let's see again the characters of phylum nematoda are commonly known as roundworms. The body have long cylindrical structures and they are pointed at both ends. Okay, they are free living as well as parasites. So हमने आपको बताया कि parasites क्या है. Okay, their bodies are unsegmented. There is no segmentation present in their body. Okay, and they have complete one-way digestive tube with mouth at one end and anus at the other end. So a straight tube is present inside their body. When they eat something, it goes through that tube, absorbs in the body, and the remaining is moved out of the body. Okay, parasites, they live in the intestines of human beings and other animals, and and the free living can be found in the upper layer of the soil, can be found in the fresh water, and can be found in the seawater as well. Ascaris and hookworms are the example of nematoda or phylum Escalamenthes. So now if you have any kind of question regarding this, you can come to the comment section and you can ask your question now. Ascaris lumbricoid are whitish, yellowish color, you can say off-white color of worms. They are present inside the body of human beings. Okay, so when they are present inside our body, so they reproduce inside our intestine.
when they become more in number, what happens to the people कि इंसान को फिर जो है वो तो भूख जल्दी लगती है, and when you eat little bit you feel like vomiting. ज्यादा खा नहीं सकते हो आप, ठीक है, लेकिन भूख बार बार लग रही होती है आपको. along with that आपका जो स्किन है वो येलोविश रह जाता है, पेल कलर में रह जाता है, क्योंकि आपका ब्लड जो है या जो फूड है जो आप डाइजेस्ट कर रहे हो वो डाइजेस्टेड फूड आपसे ये स्कैरीज खाते हैं, ठीक है. साइज में ये तकरीबन जो है 10 सेंटीमीटर या मोर देन 10 सेंटीमीटर के साइज के हो सकते हैं, ठीक है. व्हाइट कलर के होते हैं, ऑफ व्हाइट कलर के होते हैं, और दोनों एंड्स जो इसके होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ठीक है. तो ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स कहलाते हैं, ठीक है. इंटेस्टाइनल वर्म्स कहलाते हैं, दे आर नोन एज इंटेस्टाइनल वर्म्स. Any other? So sir, they are made inside our bodies, they do not come from outside. No, they are not coming. They are not formed inside the body. Okay. Normally, the things you eat, like for example, the vegetables you eat, the fruits you eat, or the meat you eat. Okay. If they are not, for example, the meat is not properly cooked when you eat that meat. Okay. So inside your body, the eggs of these ascaris go to your body, and it can then reproduce over there. Similarly, the fruit you eat, if they are not clean and neat, and you eat that, so it can go into your body. The vegetable, if they are not properly cooked, या कभी कभार आप देखते हो कि you normally go to a market to buy something, ठीक है, आप फ्रूट खरीदने जाते हो, आप वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो, तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो वहां से कोई भी चीज उठाई, ठीक है, और वो खाना शुरू कर दिया. तो जब वो विदाउट क्लीनिंग उस चीज को खाते हैं तो उसमें इन चीजों के ये जो वर्म्स होते हैं इनके एग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं. आपको नॉर्मली नजर आएगा कि वो क्लीन है, लेकिन वो क्लीन नहीं होगा. तो जब आप उसको ईट करते हैं आपकी बॉडी में जाके वो इन स्क्रीज को बढ़ाता है, वो बनाता है. इस तरह बच्चे जो है आप देखते हो, बच्चों में कॉमनली क्यों है, क्योंकि बच्चे जो है वो जमीन पे बैठे हुए होते हैं, कोई भी चीज जमीन पे पड़ी हुई होती है उसको उठा के मुंह में अंदर डाल लेते हैं. जो गंदगी जो है वो आपकी बॉडी में चली जाती है, जब वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में चली जाती है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाती है, तो वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर फिर क्या करते हैं, वहां पर ग्रो करते हैं, वहां रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी ग्रोथ को रोकते हैं वो, ठीक है. मेंटल ग्रोथ को भी रोकते हैं, फिजिकल ग्रोथ को भी रोकते हैं. आजकल हमारे बच्चे आप देखते हो ना कि थोड़ा सा खेल के जो है 15-20 मिनट खेलते हैं तो उनकी स्टेमिना खत्म हो जाती है, वो जो है फिर हिलने के लायक नहीं होते, या बाल बच्चे तो इतने कमजोर होते हैं कि वो कड़े कड़े गिर जाते हैं. तो इट मीन्स दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज बेसिकली इनसाइड देयर बॉडी. Maybe it was a nutritional deficiency, or maybe it's kind of ascaris or kind of enterobiosis present in their body. So those things when present in your body can be dangerous for you, for your health as well, for your mental growth as well, both the things. क्योंकि आपका मेंटलिटी जो है वो भी डल हो जाती है, आपको कोई चीज याद नहीं रहती, ठीक है. आप इतना डल हो जाते हो कि आप ज्यादा टाइम किसी चीज को नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है, आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं होती है जो आपको अलाउ करे टू डू दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. इज इट क्लियर? कोई और क्वेश्चन? Sir, worms usually have segmented bodies. Who? Who have segmented body? Worms. Not all the worms, okay? We will discuss those worms as well. जिनकी सेगमेंटेड बॉडीज होती है ना, हम वो भी डिस्कस करेंगे. बट ये जो वर्म्स होते हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, इनकी बॉडी जो है बिल्कुल वो स्मूथ होती है. स्केरीज का क्यूर क्या है बेटा? स्केरीज के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है. सबसे कॉमन मेडिसिन जो बच्चों में बड़ों में इस्तेमाल होती है वॉर्मेक्स के नाम से आती है. सो वॉर्मेक्स का मेडिसिन है, आप उसको सिरप होता है, टेबलेट होते हैं, आप उसको यूज करते हो, एंड नॉर्मली जो है ये स्केरीज आपकी बॉडी से थ्रू योर डाइजेस्टिव वेट्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. इस जरूरी है बच्चों के अंदर कि जब आपकी ग्रोथ एज हो, एट द ग्रोथ एज आपको तकरीबन बहुत जल्दी नहीं तो 6 महीने में एक बार, ठीक है, साल में 2 बार आपको जो है ये वॉर्मेक्स का इस्तेमाल करना चाहिए. उसकी वजह एक ये है कि आपकी जो है फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी, आप डल नहीं होंगे, ठीक है, आप ज़्यादा थकोगे नहीं, आप एक्टिव रहोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में वो वर्म्स नहीं रहेंगे. जो 2 किस्म के वर्म्स होते हैं,
एक वर्म जो है बड़े होते हैं जिसे एस्केरीज कहा जाता है, और दूसरे जो है वो छोटे होते हैं, ठीक है। वो जो छोटे वर्म्स होते हैं उन्हें वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एंटरबायोसिस काज करता है। तो एंटरबायोसिस हुकवर्म से कॉज होती है। हुकवर्म्स जो है वो छोटे साइज में होते हैं, और ये जो होती है जो इंटेस्टाइनल वर्म्स होती है ये बड़े साइज में होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मली इरिटेशन कॉज करती है, ये आपकी मेंटलिटी डल करती है, आपके फिजिकल ग्रोथ को रोकती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको क्योर किया जाए, और बहुत इजीली क्योर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? सर कितने साल का पीरियड आपने बताया? मैंने आपसे कहा कि इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो आप 6 महीने में एक बार इसकी मेडिसिन इस्तेमाल कर ले, ठीक है। 6 महीने में एक बार मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी पे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं है इसका, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता इसका, ठीक है। आपने वो मेडिसिन लेनी है, और उसके बाद जो है थोड़ा सा खाने में आपको 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा एहतियात करना होगा, ताकि आपकी बॉडी से ये वर्म्स क्या हो जाए, ये वर्म्स निकल जाए आपके डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू। तो जब ये वर्म्स बॉडी से निकल जाएंगे, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी जो है वो आपकी जो खुराक, जो खाना आप खाओगे फिर वो आपकी बॉडी पे लगेगा, वो ये पैरासाइट्स नहीं खाएंगे आपसे। अगर आपकी बॉडी में ये पैरासाइट्स मौजूद है, आप ज्यादा खा लो लेकिन आपकी बॉडी पे नहीं लगेगा। तो अक्सर औकात आपने लोगों को देखा होगा, खाते हैं, काफी सारा खाते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट उनके बॉडी पे नहीं आ रहा होता, ठीक है। या कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जब ये वर्म्स ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इंसान को बहुत जल्दी जल्दी भूख लग रही होती है, आपको भूख जल्दी लगेगी, लेकिन जब आप खाना खाओगे तो थोड़ा सा खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको वोमिटिंग हो रही है। सो ऐसा नॉर्मली हो जाता है इस चीज के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ये बढ़ जाए, ठीक है। तो इनको मारना है, इनको खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए वो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी बॉडी से वो निकल जाए, ठीक है। फबिया आप क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है उसके बारे में? नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएं। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, नहीं है तो आगे बढ़े फिर जी। तो जल्दी बोला करें ना, इसमें 1 घंटा क्यों लगाते हो? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। So this was phylum Nematoda, also known as phylum Escalamenthes. According to न्यू क्लासिफिकेशन, जब आपने प्रैक्टिकल बुक देखोगे ना तो प्रैक्टिकल बुक में इसको फाइलम एस्केलेमेंथस कहा जाता है, और फाइलम नेमाटोडा, ये जो नेमाटोडा है ये इनका क्लास है, यानी फाइलम से छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। बट इन योर बुक फाइलम नेमाटोडा इज गिवन। आई हैव टोल्ड यू बोथ ऑफ देम, फाइलम नेमाटोडा, फाइलम एस्केलेमेंथस, तो दोनों आप देख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फाइलम एनेलिडा। ओके, अब ये जो वर्म्स होते हैं ना, इनको हम कॉमनली सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। सेगमेंटेड वर्म्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। आप इनकी बॉडी देखते हो तो इनकी बॉडी में आपको क्लियरली कट्स नजर आएंगे, ठीक है। वो कट्स क्या कहलाते हैं? सेगमेंटेशंस कहलाती है। इनकी जो सेगमेंटेशंस है वो इंटरनली भी होती है और वो एक्सटर्नली भी होती है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली ये दोनों जो सेगमेंटेशन अगर प्रेजेंट हो, मींस के वो सेगमेंट्स आपको बाहर से भी नजर आएंगे और वो सेगमेंट बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर सेगमेंट बाहर से हो और बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो, then these kind of segmentations are known as metameric segmentations. Okay, a question can be asked from you in exam, what are metameric segmentation? So you will tell that metameric segmentations are those segmentations which are present internally as well as externally. So externally भी होंगे, internally भी होंगे, ठीक है। अगर सुपरफिशियल हो, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन हो, तो फिर वो सिर्फ एक्सटर्नल होते हैं, वो इंटरनल नहीं होते, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो होते हैं उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशंस कहते हैं। ओके, देयर हैबिटेट इज वाटर एज वेल एज लैंड। सम ऑफ देम यू विल फाइंड इन वाटर, द अदर you will find in land. Like for example, we are having earthworm. Earthworm can be found in the surface of the soil. Okay, leech you will find out in the water. Leech is present in the water. There are a lot of others of these kind of organisms which can be found in water, and some of them can be found in soil as well. The most common of them are earthworm,
and Ascaris. Oh, sorry, leech. Okay, leech and earthworm are the both are the most common of these annelids. Okay, most of them are free living. Like for example, earthworm is free living. It lives in the soil. It is free living. It is not going to harm you. It is not going to harm any host. So it gets its food from the soil. And some of them are ectoparasite. Now the term parasite, and along with the parasite, the term is used ectoparasite. Ecto mean outside. So it means that these parasites are not going to go into your body. They will remain outside your body. They will be stuck to your body from outside. And when they are stuck to your body from outside, they are going to suck blood from your body. So leech is a kind of parasite which is known as ectoparasite, and earthworm is free living. Okay, these organisms have well developed systems present in your bodies. Like for example, these organisms have well-developed circulatory system present in their body. They have well-developed digestive system present in their body. They have well-developed nervous system present in their body. So their systems are much developed as compared to roundworms. Roundworms do not have that much developed systems, but annelids have well-developed system. Okay, the segmented worms have well-developed system. Their respiration take place through their body surface. So their general body surface is used for the process of respiration. Okay, but circulation, they have much advanced closed type circulatory system, like the system present inside our body. Okay, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का सिस्टम प्रेजेंट है ना, कि हार्ट प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है, आर्टरीज प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, यही सेम सिस्टम जो है ये अर्थवर्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ये लीच के अंदर भी प्रेजेंट होता है. और अर्थवर्म में तो एडवांसमेंट और लीच में तो एडवांसमेंट ये है कि इनका ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है. तो इनमें एक हार्ट नहीं होता. एक अर्थवर्म के अंदर उसकी बॉडी के लिहाज से मल्टीपल हार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. मल्टीपल सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो भी मल्टीपल होते हैं, एक नहीं होता. सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होते हैं. ठीक है. सो इफ द ऑर्गेनिज्म इज लार्जर दे विल बी हैविंग मोर सिस्टम्स प्रेजेंट इन देम, यानी more organs will be present in them. If the organism is smaller, it will be having less systems or less organs present in them. So ये जो organisms है ये as compared to the previous organism जो हमने discuss किए उनके मुकाबले में these are the much advanced organisms. Okay, they are mostly the most advanced organisms present in the worms. अगर worms के categories में देखा जाए ना तो ये सबसे ज्यादा advanced organisms है. ठीक है. Example इनकी क्या है? leech और earthworm. ठीक है जी. अब आ जाए दोबारा से. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. क्वेश्चन क्या कहा आपने? सर दे हैव क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मीनिंग. ओके, दोनों बता रहा हूँ, एक्टोपैरासाइट एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. देखो, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि ब्लड जो है वो एक क्लोज सर्किट में रिवॉल्व करता है. वो क्लोज सर्किट क्या है? हार्ट है, हार्ट से आर्टरीज निकलती है, आर्टरीज से कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज से वेन्स में जाता है और वेन्स से वापस हार्ट में आता है. इसको कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सिस्टम हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है कि हमारा हार्ट है, जब वो धड़कता है तो ब्लड आगे पंप करता है. ये ब्लड जाता है आपके आर्टरीज में. ठीक है. आर्टरीज से ये ब्लड चला जाता है आपकी कैपिलरीज के अंदर, और आपकी कैपिलरीज से ये ब्लड वापस आता है आपके वेन्स में, और वेन्स से फिर वापस आता है कहां पर? आपके हार्ट में. तो इसे कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एक क्लोज सर्किट में सब कुछ हो रहा है. ठीक है. और एक्टोपैरासाइट का मतलब ये होता है, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, और पैरासाइट आप जानते हो कि ये उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो क्या करते हैं? आपकी बॉडी को हार्म करते हैं. सो ये बॉडी के अंदर नहीं जाते. अगर आप स्केरीज को देखें तो स्केरीज आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लीच जो है ये आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होगा. ये वाटर में प्रेजेंट होता है, और ये नॉर्मली अटैच होता है आपकी बॉडी के साथ, सरफेस ऑफ द बॉडी के साथ, एनिमल्स की बॉडी के साथ, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के साथ, और उनसे ब्लड सक करता है. ब्लड सकर्स है. ठीक है. सो ये एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं. दे आर नॉट एंडोपैरासाइट. इज इट क्लियर? रामूज एंड हेयर पेसल इज क्लियर? Any other question now? Wait. Which types of respiratory organs do they have? Gills? No, they do not have gills and lungs. They have diffusion. So diffusion means that they are doing what? They are going to use their whole body surface.
Okay, the whole body surface is going to be used for the process of respiration. They do not have any specialized organs like what you say, lungs and gills in them. Okay. सर वो जैसे लीफ टाइप है तो सर उनके जैसे हर सेगमेंट के अंदर अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो सर उनका एनएस भी अलग अलग होता है या एक होता है? जी what that was I'm saying, digestive system भी इनके repeat हो रहे होते हैं. They do not have a single digestive system. They have multiple digestive systems present in them. So इनकी जो segmentations होती है, ये segmentations इनकी repetition करती है organs की. तो इनमें एक organ नहीं होता, multiple organs present होते हैं, यानी same organ repeat होते हैं इनके अंदर. Heart repeat होता है. सर इनके पास ब्रेन होता है? इनके पास ब्रेन, नर्वस सिस्टम होता है इनके पास. नर्वस सिस्टम ज्यादा डेवलप नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम इनके पास. ठीक है, ब्रेन की जगह इनमें गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, यानी ब्रेन डेवलप नहीं होता इनका, लेकिन नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है. तो आप सेकेंड ईयर में जब जाओगे, सेकेंड ईयर में आप अर्थवर्म को डायसेक्ट करोगे, अर्थवर्म की डायसेक्शन करोगे ना, तो अर्थवर्म जब आप डायसेक्ट करोगे तो उसमें आप उसका नर्वस सिस्टम निकालोगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हम कैसे निकालते हैं. आसान है, मुश्किल नहीं है. ठीक है. Any other question? Okay, is it clear to all of you? No, means it's clear. ठीक है. Let's move to the third one. एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक और हो जाएगा. This is the most important one. Okay. एग्जाम में ये टॉपिक जो है टाइम एंड अगेन रिपीट होता रहता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी मच इजी, वेरी डीपली, एंड डेफिनेटली बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है. फाइलम आर्थ्रोपोडा. ओके, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट देयर आर almost 60 to 70% of the animals of invertebrates are arthropoda. Okay, arthropods have 60 to 70% of the invertebrates. So it is known as the largest phylum of kingdom Animalia. They are called arthropoda because arthropods क्यों कहते हैं? Arthro mean jointed and poda mean legs. So they normally have jointed legs. Okay, all the organisms having jointed legs, they are known as arthropoda. Okay, what are their habitat? They can be found in air, they can be found in water, and they can be found on land as well. So they can be found in all the three places: in air, in water, or in land. Everywhere they can be found, and they can survive. Their body are segmented. Okay, as I told you that some of the organism will be having externally and internally segmentation, metameric segmentation, and the other will be having superficial segmentation. So arthropoda have segments, but their segments are superficial. They are just present upper at the body. They are not present deep down the body. The segments are not present down in the body. Okay, so it does not. It means that they do not repeat their organs. They do not repeat their organs like earthworm. They do not repeat their organs like leech. Okay, so the organs are one. They have one set of organ present in them. So their body has a segmentation present, but that segmentation are just superficial and they do not go downward the body. Okay, the body is externally covered with its exoskeleton. यानी बाहर से इन पे एक hard shell present होता है. That hard shell is known as exoskeleton. Like inside our body, we have the structure of bones present. That structure of bone is present inside our body is known as endoskeleton. But these organisms do not have endoskeleton. They have an outer protective layer present, an outer protective cover present. A shell is present outer on their body. That shell is known as exoskeleton, so that it can be protected from many things. Okay, that shell is present upon their body. Their body are divided into three regions. याद रखना, इनकी body तीन regions में divide होती है. The first region is the head region. The second region is the thorax region. The thorax region means the chest region. And the third region is known as the abdominal region. Okay, so they have the head region, the thorax region, and the abdomen region. Body में पहला क्या आता है? Head आता है. उसके बाद thorax है, उसके बाद abdomen आता है. ठीक है? Most of them possess 3 pairs of legs. Remember, most of them, majority of them possess 3 pairs of legs and 2 pairs of wings. So with the legs they can move, and
stick themselves to their prey, and with the hair, by the means of wings, they can fly. So they have, most of them have 2 pairs of wings and 3 pairs of legs. ये हम 100% की बात नहीं कर रहे, most of them की बात कर रहे हैं. Okay, about 95% of the arthropods are insects. तो इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि 3 pairs of legs और 2 pairs of wings प्रेजेंट होते हैं. रिमेनिंग 5% जो होते हैं वो इंसेक्ट्स नहीं है, उसमें डिफरेंट कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स आते हैं. कुछ जो है वो सी वाटर में होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ लैंड पे प्रेजेंट होते हैं. बट 95% ऑफ देम आर insects. So insects is the largest group of arthropoda, or you can say it's the largest class of arthropoda. Okay, the examples are insects, crab, prawn, scorpion, butterfly, cockroach, etc. Butterfly and cockroach also comes in insects. Okay, they're also kind of insects, but insects have lots of other things as well. You can remember that, and you have the idea about those things that कौन-कौन सी चीजें हमारे पास insects में आती है. So arthropoda is the largest phylum of kingdom in Animalia. Majority of its animals are insects. So 95% of them are insects. They are segmented bodies, but the segmentation are just externally. Habitat can be anywhere in water, land, or in air. Okay, they have the body is divided into head, thorax, and abdomen. Their body is externally covered with exoskeleton, that is an external cover present on their body. Okay, most of them have 3 pairs of legs and 2 pairs of wings present in them. So these are the phylum Arthropoda characters. If you have any question regarding phylum Arthropoda, now you can ask the question. Any question? No question at all? So it's clear to you all. What does it mean the body has segmented? Means the segments are present externally, upper on the body. You will not see that deep. यानी अंदर नहीं होते बॉडी के अंदर, जैसे अर्थवर्म में होते हैं, जैसे लीच में होते हैं. सिर्फ ऊपर ऊपर प्रेजेंट होंगे, आपको ऊपर से सेगमेंट्स नजर आएंगे. वो सेगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो सेगमेंट्स इसके एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है उसमें प्रेजेंट होंगे, वो इनके बॉडी में अंदर नहीं होंगे. Thorax means chest region. So they have head region, chest region, and abdominal region. 3 regions are present in their body. Clear? So okay, very good. It was clear now. Now one thing